So very good morning to all. And today topic is the flexibility exercise. तो अगर हम बात करें flexibility की, so it take a very important role in the fitness, in the health, and particularly हम क्या करते हैं कि हम एक मसल्स की flexibility या stretching करते हैं. Suppose I am talking about this muscles, upper trapezius. Okay, so everyone knows कि stretching of this muscles is like this. But today I am going to take session कि आप group of muscles को कैसे stretch कर सकते हैं in one exercise. In only one exercise, how you can stretch a group of muscles. Group of muscles means more than 2 or 3 or 4 muscles. How you can stretch. Okay, and इसकी जो इफिकेसी है, इसका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा है अगर हम इंडिविजुअल मसल्स से कंपेयर करेंगे. अगर हम इंडिविजुअल मसल्स को स्ट्रेच करेंगे और ग्रुप ऑफ मसल्स को स्ट्रेच करेंगे, so the result is the greater than the single muscle stretch. Okay, so let's start. And start करने से पहले, so the session is, the topic is to whole body stretch, flexibility exercise basically. So whole body means your upper body and your lower body, और बीच में आ गया आपका trunk, your core. So first मैं आपको अपर बॉडी की एक्सरसाइज बताऊंगा, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, कि आप कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं, एंड देन फॉर द लोअर बॉडी, एंड लास्ट अपर बॉडी एंड द लोअर बॉडी मिक्स, हाउ यू कैन स्ट्रेच. ओके ओके, so let's start and start with a little bit of warm up. So stretch your arm, go up, take a deep breath and down, again stretch up, hold here, breathe in and breathe out. One more time, stretch up and down. Now place your hand here and turn to the right side and the left side. Right side and the left side. Again, right and on the left. Okay, now the same hand here, go forward and then back. So just simply move your body and prepare your body for the exercise. Stretch, go down and stretch, go up. Move your shoulder. Clockwise and anti-clockwise. Both sides. Very nice. Do it slowly. Now, बैठ कर ही हम अपने लेग को भी स्ट्रेच करेंगे. So how to stretch? Just hold your leg and stretch, go up and down. Again stretch, go up and down. Again down, again and down. Stretch up and down. Okay. Okay, now just stand up everyone. Now move to the next, move to the upper body. कि हम upper body की जो एक्सरसाइज है, जो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज है, वो ग्रुप ऑफ मसल्स मीन्स, अगर मैं बात करूं फ्रॉम द शोल्डर टू द आर्म्स, फोर आर्म, हैंड एंड योर फिंगर्स, आप इन सब मसल्स को एक साथ कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं. ओके, सो देयर आर थ्री एक्सरसाइज बेसिकली जो कि मैं आज कराने वाला हूँ फॉर द अपर बॉडी. ओके, तो स्टैंड, थोड़ा से वाइड, अपने लेग्स को थोड़ा से वाइड करके खड़े होना. मेंटेन अ डिस्टेंस अ लिटिल बिट.
Now take a deep breath in and out. Take a deep breath in and out. Okay. Now हाथ को आपने आगे की तरफ ऐसे, and your wrist should be like this. Your wrist should be like this. नीचे की तरफ नहीं, ऐसे सामने की तरफ, like this. Okay. Now the exercise, आपको ऐसे खड़े होना है, and with the breathe out, go forward. And forward, when you go forward, so just check my movement. When you go forward like this, and bring your fingers inside. Bring your finger inside. Go forward, and then relaxed. So breathe out, go forward, and breathe in, come back. So when you go forward, you feel a stretch from your shoulder to your upper back to the whole arm, and then breathe in, come back. So breathe out and breathe in. Okay, इसको बहुत जल्दी नहीं करना है. When you breathe out and hold this one for the 10 seconds at least, 5 to 10 seconds, and breathe in, come back. So एक बार one breathe and one stretch. Breathe out कर लिया और आपको hold करना है. Hold and hold the posture, hold the position and hold the breathing. When you breathe in, come back. Okay, so breathe out and breathe in, do it for 10 times, and stretch your fingers like you have to do like this inside. When you do like this, you feel a good stretch from your whole upper body, your whole hand. Do this one for the 10 times and take rest. Okay, one more point. आपका जो एल्बो है वो बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रेट मत रखना, थोड़ा सा ऐसे बेंड कर सकते हैं. स्लाइड बेंड, बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रेट नहीं रखना. स्लाइड बेंड यू कैन डू. इफ यू कैन स्लाइड बेंड, सो उसमें भी आपको स्ट्रेच फील होगा. ब्रीथ आउट, go forward and stretch, and breathe in, come back. Breathe out and hold. Breathe out and hold, and breathe in, come back. Very nice. Again, breathe out, out, and come back. Again, go forward, आगे की तरफ, and hold here, just hold and come back. Okay, now just take rest everyone. Okay, so this is the forward. हम ऐसे ही 3 एक्सरसाइज करेंगे. तो forward, अपवर्ड ऊपर की तरफ, इन द साइडवेज, है ना. तो हमने फॉरवर्ड कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू डू अपवर्ड, ऊपर की तरफ. सो सेम मूवमेंट करना है. ऊपर की तरफ हाथ को शिफ्ट करना है. रिस्ट अगेन, योर रिस्ट शुड बी लाइक दिस. ओके, एंड गो अप. हाथों को ऊपर की तरफ पुल करना है, खींचना है. And stretch up. Breathe out के साथ just stretch up, hold that posture, and you feel from here till here, all the way. Feel stretch. And खड़े होकर करना है. बिल्कुल खड़े होके करना है. खड़े होके ही करना है, बैठ कर नहीं.
All the exercise should be in standing position. So 10 times. Breathe out, go up, hold, breathe out and hold, breathe in and come back. And you feel a good stretch from your upper back till your fingers. बताइए एक बार सर पता नहीं. Yes? You asking something? Again, breathe out, go up, hold, 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 breathe out के साथ hold. Just stretch up, stretch up, stretch up and back. Again, go up, do 10 times. Stretch up, hold, 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 and down, and relax. Breathe out, go up, up, up. Fingers go inside, stretch your fingers, and breathe in. Come back. Again. Inside, your fingers inside and breathing. Okay. So just take rest. A little bit take rest. Then we go for the sideways. So the three stretching. Forward, upward, sideways. जब आप फॉरवर्ड करेंगे तो आगे की तरफ, बॉडी को आगे की तरफ लेके जाना है. When you do up, बॉडी को ऊपर की तरफ. When you do sideways, तो बॉडी को आपको साइडवेज लेके जाना है. That means you have to create a force for the pull up. कि आपके जो आर्म्स है, आपके जो अपर बॉडी है, वो साइडवेज पुल हो रहे हैं. Then only you feel a good stretch. Okay, so let's start with the sideways. Stand. आपको खड़े होना थोड़ा से वाइड करके, दोनों फुट के बीच में थोड़ा से डिस्टेंस. ओके, नाउ स्टैंड. हाथ को यहां पे रखना है एंड ब्रीथ आउट. Stretch, breathe in and come back. 1, again 2, breathe out, stretch and breathe in. Breathe out, hold and breathe in. Out. तो मूव लाइक कि आपके दोनों हाथ बाहर की तरफ एंड कम बैक. अगेन ब्रीथ आउट, स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच आउट एंड कम बैक. Again, breathe out. Come back. And again. This is the second last. Hold here for the maximum. And back. Now the last one. Breathe out and hold. Hold, stretch, sideways, stretch, 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 and relax. Now sit down, everyone.
Okay, so these 3 exercises for your upper body. Now move to the next one. And the next one for your fingers, only for your fingers. Okay. तो इसको हम बैठ के भी कर सकते हैं. For the fingers means not only the fingers, but finger, your wrist, and your arm. These all muscles going to be stretched. And this is the simple movement you have to do only. The simple movement, and you feel a good stretch. So what is the movement? Sit down straight. Okay. और आपको हाथ को सामने की तरफ एंड सामने की तरफ ऐसे करना है एंड मेक अ फिस्ट, टाइट फिस्ट. ओके. ना अभी इसी फिस्ट को आपने ऊपर की तरफ रोटेट करना ऊपर एंड वन बाय वन आपको फिंगर्स स्ट्रेट करना है. स्ट्रेट का मतलब ओपन अप वन फिंगर ऑन द बोथ हैंड, रिमेनिंग जो 4 हैं वो ऐसे रखना है आपने. Now the second one, open up and make a wrist like this. Wrist ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं. If you do like this, so stress नहीं आएगा. Do like this. Open up like this. Now, finger third and stay there. Fourth, stay there. And 5. And open up your fingers like this. Open up, open up, open up, open up. And then close, thumb. Now, one by one, आपको fingers को close करते रहना. And then again make a fist. Go down and take rest. So you feel a good stretch from your fingers to your forearm. एक बार इसको और करेंगे. Again, go forward, make tight fist and go up. Now, move one finger up. Now the second one, go up. Now the third one, go up. Fourth and the fifth, and open up your fingers. Open up. अच्छा गैप होना चाहिए फिंगर्स के बीच में. And your wrist should be like this. Feel a good stretch. Should feel a good stretch. And then one by one, close it, close, 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 and take rest. Okay. Now, the same हम करने वाले हैं with the sideways. अभी हमने front किया है, same sideways. So sideways में कैसे? Open up, make a tight fist, and go up, and move one finger up. Now the second one, third one, fourth, and the fifth, and open up your fingers. Fingers के बीच में अच्छा gap होना चाहिए. Open up and stretch up. Hold and make a fist one by one. Close your finger one by one. एक एक करके close करते रहना. एक एक करके close, and then take rest. Okay, now again, same, open up, make a fist, go up, and one by one, open up. 3, 4, and 5. Now, one by one, close. सौरभ Close. थोड़ा एक्स्ट्रा क्या लगे
close, সাবস্টিটিউট থেকে কেউ চুপ twist, থাকতে আর কিছু নিয়ে Okay. এসেছে নাকি? down. Okay. So this is your only 4 fingers, your wrist and your forearm. Now, move to the lower body. So this is all for the upper body. Stretch up, stretch forward, stretch up, stretch sideways. So when you do like this movement, so you feel a good stretch here, है ना? आपको वो stretch इस area पे लगेगा. When you do fingers वाला, so you feel the stretch here. Okay. So these muscles, back side of your arm and the front side of your arm, this both should be stretched. Back side and the front side. Okay. Now move to the legs. So for the legs, मैं पहले बैठकर बताऊंगा आपको कि what is the stretch. Then उसके बाद standing position. So for the sitting, okay. Sit down and one leg. आपको एक लेग को ऐसे सामने की तरफ स्ट्रेच करना है. Means open up your leg, one leg. And move your fingers, your thumb up like this. Move your fingers, put fingers like this. Okay. Now slowly go forward. हाथ को सामने की तरफ लेके जाना है. From the thighs, from the here. Go forward, 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 and try to touch your toes. Now from the toes to the calf and the hamstring in your back, you feel a good stretch from the fingers to the back. Stretch up, stay there with a breathe out, and with the breathe in, come back. Again, with the breathe out, go forward. With the breathe out, go forward. Hold your breath out and hold your posture. And breathe in, come back. Okay, now do it again. Breathe out and go forward. Go forward and hold. Breathe out and hold. Breathe in, come back. So 3 on this side and change your side, change your leg. We are going to do 3 on your other side. So fingers, leg की जो fingers हैं, जो आपके foot की fingers है, जो thumb है, उसको ऊपर की तरफ stretch करके रखना है. Then only you feel a good stretch in your calf and the fingers. Again, go forward with a breathe out. Go forward with a breathe out and hold. Hold there. Hold. And slowly come back. 1. So we have 3 times करेंगे. Now the second one, go forward. Go forward, stay, and slowly come back. 2. Now the third one. Breathe out. And breathing. Okay, so this is the simple exercise for your lower body.
Now with the standing. Standing, how you do? Okay. So for the standing, keep one leg forward and one back, like this. So in this exercise, you feel a stretch in your lower body, in your leg, और थोड़ा सा stretch आपको upper body में भी feel होगा. You feel upper body stretch also. Okay, so the exercise is one leg forward and one back, and move your hand. जैसे मैंने अभी forward वाला बताया था, same. Just move your hand like this forward, one leg forward, one back. Then move forward, forward, and stay here. And then come back. So breathe out के साथ go forward, breathe in, come back. जो आपका forward leg है, उसका जो knee है, उसको आपने bend नहीं करना है. Should be straight. You can see here. This one should be straight, don't bend, should be straight, and go forward. Okay, so forward leg and the back leg, both should be straight, hands here, and with the breathe out, forward, stay there, and you feel from your leg till your back, till your upper arm, upper body, and your fingers. A good stretch from the whole body. And breathe in, come back. Okay. Again, breathe out, stay forward, breathe out, stay forward. And breathe in, come back. Now 3 times on your right side and 3 on the left. अगर 3 times हो चुके हैं, so just change your leg. डॉक्टर, एक्सक्यूज मी डॉक्टर, वो पीछे का जो लेग है उसका वो दिस वी हैव टू लिफ्ट इट और नॉट? No, don't lift. Heel should be on the ground. Your heel should be on the ground. Okay. वो ground पे रहेगा. Okay, now change your side, change your leg, stand straight, और दोनों leg को सीधा बिल्कुल straight रखना है. So just check your foot, कि वो सीधे वो straight है कि नहीं है. Keep them straight, and breathe in and breathe out. Forward. Stay there. Hold. And come back. Again. Go forward. Come back. Now the last one. Go forward again. And come back. Okay, now take rest. Sit down everyone, take rest. Take rest, breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Okay, so आज के हम last exercise करने वाले हैं. And the last exercise again for the whole body
स्ट्रेच, और इसमें आपको कुछ मूवमेंट करना है। स्ट्रेच के साथ आपको कुछ मूवमेंट्स करने हैं। तो व्हाट इज द मूवमेंट? अगेन आपको एक लेग फॉरवर्ड करके और एक पीछे करके ऐसे ही खड़े होना है। वन लेग फॉरवर्ड, वन बैक, एंड ओनली वन हैंड। जिस लेग का जो भी लेग आपका फॉरवर्ड है, उसी साइड का आपका हैंड फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। सपोज आपका लेफ्ट लेग फॉरवर्ड है, तो लेफ्ट हैंड शुड बी फॉरवर्ड। ओके, नाउ फॉरवर्ड and move your body to one side and then come back. ये वाला हाथ आप यहाँ पे रख सकते हो। ओके, गुड। वन लेग फॉरवर्ड, वन बैक। सो अभी मेरा लेफ्ट लेग फॉरवर्ड है और मैंने लेफ्ट हैंड को फॉरवर्ड किया हुआ। लेफ्ट लेग फॉरवर्ड एंड लेफ्ट हैंड फॉरवर्ड। So forward and move your body to the right side. Stay here. Stay here with the breathe out. And come back. So move your body. That's mean कि आपको इतना move करना है so you can feel a stretch in your whole body. You should feel the stretch in your hip, in your leg, and in your this area. So when you move, you feel a good stretch from here till here. Okay, so just hold this posture for the sometimes like 5 to 10 seconds. Just hold this posture and with the breathing come back. So breathe out, turn your body, and breathe in, come back. Breathe out, turn your body, and breathe in, come back. So do 5 times on this side and the 5 times on this side. Right and left, दोनों तरफ करना है। 5, 5. 5 on the right side and 5 on the left side. So do both sides. One hand here and then go to this side and stretch. So you feel a good stretch from all over your body. Stay here. Stay here. With the breathe out and breathe in, come back. Okay, so you can focus on your hand. When you move, you can focus. आप focus कर सकते हैं अपने hands पर. Breathe out and move. Focus on your hand. Focus. Stretch up. Stretch up. Focused. Breathe in. Come back. So do it slow. बहुत ज़्यादा fast करने की जरूरत नहीं है. And hold. Holding is the thing. अगर आप स्ट्रेच में होल्ड नहीं कर रहे हैं, डेट्स मीन कि आप स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हैं। आप जितनी देर स्ट्रेच को होल्ड करेंगे उतना ही बेनिफिट है। बैलेंस खराब हो जाता है परवेज सर, बैलेंस। हाँ, बैलेंस खराब हो जाएगा। तो व्हाट यू डू, अगर एक दूसरे के सामने लेग्स को रखे हुए हैं तो उसके बीच में थोड़ा सा गैप कर सकते हैं। तुम्हें কেমন আছে মা? प्लीज अपने माइक ऑफ कर दीजिए। না না, ওই যে হার্টের প্রবলেমটা একটা এনজিওগ্রাম করিয়েছিলেন না, ওটা একটা পেসমেকার বসানো হয়েছে। Okay, so 5 times on the right side, 5 on the left, মেটাবলিজম এটসেট্রা তে পানি and sit down, take rest. তো একটু মানে আস্তে আস্তে ওটা হ্যাঁ Please unmute yourself. अगर किसी का म्यूट है तो अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके, तो दिस इज द एक्सरसाइज। आप राइट साइड की तरफ और लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट हुए। नाउ द सेम एक्सरसाइज आपको रोटेट करना है, आपको मूव करना है बॉडी टू द दिस साइड
You feel a stretch from your fingers to your back and till your leg, from this side and this side. The same exercise, लेकिन आपको ऊपर की तरफ stretch करना है अपनी body. Okay, so again with a breathe out, one hand here, and with the breathe out, go to this side and just move your fingers inside. अगर ऐसे रहेगा तो stretch नहीं feel होगा. Just inside. And breathe in, come back. Now you can change your side. Again on this side. So 5 times on the right side and 5 on the left. Stretch up. And come back. Again, change your side. Breathe out and hold. Just hold. Breathe out and hold. Come back. Again. So 5 times on the right, 5 on the left. Breathe out and hold. Come back. So we are done 3 times, 2 more. Come back. The last one. Stretch. Come back. And then this side. Hold. Hold here. Okay. Now just take rest. जिनके complete हो चुके हैं, just take rest. Take rest and deep breathe. Relax yourself. Take a deep breath in and out. Okay, so this is all the exercise for your stretching, for the whole body stretching basically. So the exercise benefit, आप एक पर्टिकुलर मसल्स की अगर आप स्ट्रेचिंग करेंगे, so it's take time, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, and there are too many muscles in the body. So this is the stretching exercise जो कि आपके ग्रुप ऑफ मसल्स को स्ट्रेच करेगा एक सिंपल एक्सरसाइज में, एक सिंपल टेक्निक में, you can say. Okay, and you can Very stretch your relaxing. whole body. Yes. Always very जी. relaxing exercises were there. Very nice. Okay. इतना अच्छा स्ट्रेच हुआ पूरा whole body. Okay, thank you, thank you. Okay, so anyone have any question? Just ask. Dr. Yeah. Parvez, feedback form डालिए please. Feedback form. Feedback form. Okay. Dr. Anurag. हाँ जी. Yeah. तो एक फीडबैक फॉर्म सेंड कर दीजिए चैट बॉक्स में. मैं भेज देता हूँ. डॉक्टर आपने जो बताया, एक्सक्यूज मी, हाँ, डॉक्टर आपने बताया जो लेग का बताया ना, वन सिटिंग पोजीशन में वन जी. लेग को फॉरवर्ड करके पहले आपने बताया टोज को मूव करें, जी, टोज को मूव करें एंड देन हैंड को नीचे तक लेके जाएं और टू बिल्कुल. टच द टोज. So in course. that position, the foot will be touching the floor or only the heel will be touching the floor?
ओनली द हील, ओनली द हील। आपके जो Only फिंगर्स the है वो heel. ऊपर की तरफ रहेंगे। अच्छा, तो we have to touch the toe and the leg, foot should be on the upward position. अपवर्ड्स, अपवर्ड्स, अपवर्ड्स। Can you show me? ओके, अगर आप नीचे पूरा कैमरा करके दिखा दें। बिल्कुल। So straight and foot Yes. like this. Yes. Fingers here, and with the breathe out, go forward, 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 forward. Hold here, and with the breathe in, come back. And leg should be straight. Legs should be straight. Your knee should be straight. ठीक. Okay. Thank Oh, thank you. Thank you. So chat box में feedback form का link मैंने डाल दिया है. You can just click on it and submit your feedback. So if there are no further questions, then आज का सेशन I think हम यहीं पे wind up कर सकते हैं. Right. So thank you so much to everyone for joining in, and I will see you all tomorrow now. So till then, everyone, take care and stay safe. I'll see you tomorrow. Bye bye. Bye, bye everyone. Take care.